My lord, can I make a small request that this child and the mother have come? My lord, we're going to speak to them in camera in the chambers. So I would request my lord that please meet the mother and son first, then you meet the father, and then you meet all three together, my lord, so that my lords will have a full picture. You file a reply to the IAS. You are all two IAS is IAS. So after me, भेजना you are for father. I am for father. So our request is only because of the relocation. We are saying that to amend that interim order of visitation, that he will have visitation rights now in Delhi. That's all, nothing else. Because the mother is paying for the child's education in any case. His father is not paying 4.5 lakhs in Delhi, in Bhopal, now 5 lakhs in Delhi. She's getting him the best education, best sportsmanship. Father, unfortunately, could not even send that 3,000 rupees which my lords had asked him to pay. So, but we are okay. My lords have said he should have visitation rights. But let it be in Delhi or Gurgaon, wherever my lords feel correct. Let the child study, my lord. At least he's getting good training there, good school. There's a father. The father feel direction, but we can find. He's present in law. He's in law. All that people. Please come at 2:30 will take up at 2:30. Very well. In chamber, then. Very well. Yes, sir. क्या कहना है? Right. इसमें हमारा ऑफिस 45-27 तक टेक्निकल that can only be decided at the time of final hearing. Consider that it is important for those documents to be placed in evidence. Then the case has to be remanded back and fresh if they have to be proven as per the evidence. उसके basis पे जो इंटेलिजेंस का फाइनल ऑर्डर इस स्टेज पे ये लोग मॉडिफाई मतलब पॉइंट cannot be okay. इनका सर एक बार कंडक्ट रिप्लाई देते इन्होंने 16 April the application is filed claiming that there are new developments in the matter. Jabki if you look at the compilation, this is not a new development. They have planned this development since at least October 2024. And you look at page 67 of the compilation. उसमें जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है फॉर एडमिशन बिफोर गुड़गांव स्कूल इट इज डेटेड अक्टूबर 2024. उसके बाद तो इस कोर्ट में इस ऑनरेबल कोर्ट में विजिटेशन के आर्गुमेंट्स में तब भी इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन लगाई थी. अब इसके बाद इन्होंने टीसी जो है डेली कॉलेज से ये भी 28/3/2025 को ले लिया अकॉर्डिंग टू पेज 75 ऑफ देयर कंपाइलिंग. तो इन्होंने तो यूनिलैटरल सारे डिसीजन ले ली, एडमिशन भी करा लिया, बच्चे को वहाँ भेज भी दिया, टीसी भी ले ली. ये सब लीगल एक्ट के बाद ये यहाँ कोर्ट में हाउ दिस एक्ट इज लीगल. आई विल डेमोंस्ट्रेट दैट. इज देयर एनी मेंशन दैट कि नहीं द चाइल्ड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम इंदौर एनी सबमिट सर इंजंक्शन लीगल इंजंक्शन बट कैन बी गार्जियंस इन व्हाट दैट सेक्शन 26 यू हैव ओनली विजिटेशन राइट बट प्लेस इज नॉट मेंशन एट व्हिच प्लेस यू विल any you to lot of order but maybe include order. आपको जो नहीं है include order में नहीं but here lot of they are seeking modification or that time both were at that's why that was arrangement was made. So but there is no mention for movement of movement के ऊपर सर law में mention है. मैं एक जरा सा मेरे को डेमोंस्ट्रेट करने दीजिए. The Guardians and Ward Act का signing is section 26. इसमें 26 section 6 of the Hindu Adoption and Genome. तो यहाँ पे नेचुरल गार्डन नहीं है, यहाँ पे ये कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्डन. नेचुरल गार्डन the natural guardian because the child is aged more than 5 years. 8-year-old child. ये कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन कोर्ट अपॉइंटेड ना कहेंगे बट कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन. तो इन पे जो सेक्शन 26 इज एप्लीकेबल एंड सेक्शन 44 इज आल्सो एप्लीकेबल. 44 में तो पनिशमेंट 1 साल 6 महीने.
if they take the child out of the jurisdiction of this court, particularly during the pendency of this custody, तो फिर इन्होंने इनके कंडक्ट में थोड़ा सा करना, तो इनको ये जो आज परमिशन अप्लाई कर रहे हैं, ये इनको पहले परमिशन अप्लाई करनी थी. Now they, when they have conducted everything, यहाँ पे child भी नहीं है, mother भी नहीं है, now they are applying for, they want to get a legal seal of an illegal act. Your Lordship, section 6 is what I am relying. Minority and guardian. रिलोकेशन के ऊपर तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस अपने एमपी हाईकोर्ट में भी ऑनरेबल कोर्ट में दी है. तो इसमें चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइंस हैव अपलोडेड ऑन ईआरपी. इसमें कहीं इसे पेज नंबर 9, चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन, 90 डेज का नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड टू द नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स. यहाँ पे उन्होंने एक दिन का नोटिस भी नहीं दिया, और इतना बड़ा डिसीजन चाइल्ड के लिए ले रहे हैं. 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए वो सिर्फ फुटबॉल खेलने का इन्होंने, इनका आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ वो स्कूल में बेटर है. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट स्कूल, जबकि दिल्ली कॉलेज इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. तो चाइल्ड हु इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल स्पोर्ट्स में एट दिल्ली कॉलेज, जहाँ पे उसके नाना नानी है, मदर है, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, एपिलेंट्स हैं, वहाँ से हटा करके एक ऐसे अननोन प्लेस में, गुड़गांव में, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्लेम the mother is going to expand business, who will take care of the child? Sir, just 2 minutes, sir, इनकी conduct note on the conduct कि इन्होंने क्या किया. Even their affidavit में signatures are false. I can demonstrate that. वो इसको अभी नहीं. तो 13 को सिग्नेचर हुए सर, 16 को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी, 13 को चाइल्ड एंड मदर हैड ऑलरेडी गॉन टू गुड़गांव, 21 को यहाँ मेंशन किया सर थे, जबकि 21 को वहाँ क्लासेस शुरू होगी. क्लासेस शुरू हो गई वहाँ पे, तब इन्होंने यहाँ केस मेंशन किया. तो when they have actually taken all the action, तो यहाँ कोर्ट में क्या किस चीज की एप्लीकेशन. सर इन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्ट कंसील किया लॉ. मैंने वो 41-27 की हमने भी एप्लीकेशन की, वी हैव नॉट रिप्लाइड टू येट. उसमें 2 जजमेंट हैं. एक जजमेंट तो द क्रिमिनल केस व्हिच दे फाइल ऑन अस दैट बीन कॉज्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट. दूसरा सर सेक्शन 9 their second divorce petition has been rejected by the family court on 4th of April. This application was filed on 16th of April. They have not mentioned about it. उसमें हमारा काउंटर क्लेम सर वो एक्सेप्ट हुआ है. ऑपरेटिव पार्ट हमारे कंप्लाइनेशन का पेज नंबर 30 पे है. उस पेज नंबर 30 में इनको डायरेक्शन है कि दे शुड जॉइन और कंपनी विदिन 2 months. वो चीज ऑनरेबल कोर्ट से कंसील करके अब वो तो पूरा शहर ही छोड़ने की लीगल सैंक्शन आ रहे. So the whole objective of this exercise is to deprive me and the child of fatherly affection. एक ही सिटी के अंदर सर इतना अच्छा बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है, तो there is absolutely no reason why he should be disturbed of. ठीक, तो मेरा एक brief note है सब 2 पेज. Yes, Mr. Kankar. So I was hearing these arguments, and I thought they are not arguing for the child; they are arguing for themselves. If my lord sees, the admission procedure in Delhi is not easy. It's only at the last moment the Delhi schools tell you that they are giving you admission or not giving you admission. If I start the process of admission in October, it's only because there is a process followed by all schools in Delhi. Has the husband even paid the fee of the child even for 1 month in Delhi college? I mean, the kind of arguments I'm hearing today, as if the father has been taking care of his education.
It's the mother who's been taking care of the entire fee, that is nearly 4.5 lakhs, I think, annually. It's the mother who's going to take care of the education in Delhi. And even that 3,000 which my lords had granted as maintenance, ask him how many months has he paid that maintenance. So you can't try to dictate the mother who's taking care of the child. She's the well-wisher of the child. She's taking him to a good school. She's taking to a good city. She's taking him into a school which has facilities. And I'm not even saying that there should be no visitation. The guardianship will remain with the mother, whether it is Indore or Gurgaon. How does it matter? So but there is a statutory bar. there's no bar at all. That's what I'm saying. It's There is a always statutory bar. You there's can't no move the statutory. ward from the custody, from the jurisdiction of the court. No, there's no bar, sir. Section It's 26. I've never. There's no. Where is the statutory bar, sir? I have to. I have to take the court into confidence. That's about all, sir. A guardian of the person appointed or declared by the court, unless he is a collector or a guardian appointed by her, shall not, without the leave of the court by which he was appointed or declared, remove the reward from the limits of judiciary, except with such purpose as may be prescribed. So that's what I've done. The moment admissions happened, I came to this court to seek permission. No, but application is not under order, this section 26. So, but at the end of the day, my lord, are looking at the interest of the child. Now, we moved an application only because the child's interest is involved, sir. And are we? I'm frankly speaking, sir. These are family issues. I even feel bad arguing such cases because there's a child standing in front of my lord. It's a 9-year-old child. But as I said, what is in the best interest of the child is happening, sir. And now he has been moved to a good school. We are not against visitation rights. Whatever conditions my lords would like to impose, please impose those conditions. And even I believe, while at Indore, the father hardly had, he virtually never met the child. He would come to the gate and go away. I mean, they never even had a conversation. So now the mother is trying something good for the child. Yes. To object is what I'm saying, my lord, is not palatable, my lord. It's looking very, for me, it's looking very odd, my lord, because a small child is involved. And we're all, and at the end of the day, my lord, it is the interest of the child. Whatever my lord would do is for the interest of the child. If my lord feels what the mother is not being doing something in the interest of the child, my lord would say no. If my lord feels that she's taken a step forward, because at the end of the day, Delhi is a bigger place. Both for the mother, she's a young lady also. She also needs to earn well, to do well in life, to support the child if she has to pay for his education. Tomorrow he will grow up, he may want to go to Europe, he may want to go to US. The mother has to pay for that. So she's taken the entire responsibility upon herself. And then somebody objects that why are you doing it? This is what I'm finding very odd, sir. If the father was paying the fee of the child, I would have bowed my head, my lord. I would have told the mother that you're doing a wrong thing. If she's paying that 4.5 lakhs as the complete fee, she's paying the fee there also, in Indore also. So after that, to keep objecting merely because they have an issue of divorce. Well, as I said, in divorce cases, it's very difficult to say what is right, what is wrong. That is why I never, but I hate arguing divorce cases, because everybody is right and everybody is wrong. It is a too emotional thing which we can't address, my lord. But right now, let's look at the interest of the child, my lord, and take a call, my lord, whether what the mother has done for the interest of the child is correct or incorrect. And at the end of the day, she's supporting the child. That's very important. That is what's important, that she's supporting the child. एक तो ये जो है, अगर relocate करना होता है तो इसका प्रोसीजर जो है चाइल्ड कस्टडी गाइडलाइन 90 days का नोटिस ऑफ इंटेंट दिया एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द नॉन कस्टोडियल नाउ हियर इज फर्स्ट पार्ट। हाँ तो वो और दूसरा सर मुझे कि बार-बार इस चीज पे बोल रहे हैं कि
father certainly with the father certainly with sir. Look to it not amount to the child is नहीं दिया है सर इनिशियली दिया है उसके बाद लास्ट इट पर 1 ईयर अगो 1 ईयर 30,000 ऑल्सो वोट पे और उसके बाद सर हर बार जहाँ केस लगा हर बार वी वेंट इन दिस बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिकॉज दे वांटेड टू दिस ऑल ग्राउंड कि हम बाद में ही क्लेम करेंगे दिस मल्टीपल टाइम्स वी आस्क्ड देम फॉर द यूपीआई एड्रेस इन्होंने डिवोर्स के समय भी जो आपको बताया नहीं कि कहाँ पे हमको पेमेंट करना है तो दे व्हाटएवर वाज द लास्ट फोन नंबर ऑन व्हिच वी मेड पेमेंट उसके बाद ये है कंफर्म अब तो जहाँ तक इसकी बात होगी है दे मूविंग टू अ गुड सिटी इंदौर इज नॉट अ बैड सिटी इंदौर इज अ वेरी गुड सिटी Delhi College is a well-known institute all over the country. And multiple cases that out of this father pays for the child's education, but the custody remains with the mother. So why can't it be so? Vice versa also not? That is not a ground for them to speak. At that stage, in many cases, the father needs to clearly calculate because I am taking for the money. बच्चे की वेलफेयर क्या है सर ये आप तो बच्चे को पसंद वाले उसको तो सेपरेट सेक्शन इन चाइल्ड कस्टडी है इसलिए लिखा है बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना कल से तो क्या स्कूल नहीं जा सकता सर मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ स्पेसिफिक इसमें क्यों लिखा है और अब जैसे मेरा वेलफेयर वाला पॉइंट की जो आर्ग्यूमेंट तो वो जो लॉ तो स्पेसिफिकली सेक्शन 26 से or permission is required from the consider. So permission has to be in advance. It cannot be a post facto permission. 90 days तो पहले notice हमको देना चाहिए. So otherwise that will be completely meaningless for this provision of 26 and 40. So the MP can put. I have got a hard copy of this. तो इसलिए चाइल्ड के ओपिनियन के ऊपर बहुत बड़ा सेक्शन है तो हम अल्टीमेटली नहीं कह रहा सर कि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है हमारे जॉइंट फैमिली में भी जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसका बेटा भी दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है हम पढ़ा सकते हैं सर दिल्ली कॉलेज ये कस्टडी हमें देते हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ा देंगे और हमारे पास अगर कस्टडी रहेगी तो इनको विजिटेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन मतलब हम नहीं करा देंगे व्हाटएवर द कोर्ट हम फुल विजिटेशन इन्होंने वीडियोस लगाए हैं सर कि बच्चा इज फेसिंग द वॉल एंड नॉट टॉकिंग टू द फादर हाउ इज दैट इन देयर फेवर फादर को ऐसा मतलब बच्चे को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया फादर के अगेंस्ट फादर इज नॉट अ क्रिमिनल कि बच्चा उनकी तरफ देखेंगे इस तरह का इन्होंने ब्रेन वॉश किया दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी एज पर गाइडलाइंस आप फर्दर एग्रीमेंट करने का पता नहीं 18 साल तक जब तक होगा तब तक पता नहीं क्या बता देंगे फादर के बारे में तो सर मेरे यहाँ मुझे जो ब्रीफ एनकाउंटर इसके साथ मिल रहे हैं सर वो भी खत्म हो जाएंगे यहाँ पे बच्चे के देखभाल के लिए हम लोग भी अवेलेबल हैं इसकी तरफ से भी नाना नानी भी रहते हैं वहां पे सिर्फ मदर जारी होगी बिजनेस एक्सपैंड करना बच्चे का अंधकार है जीवन वहां पे मेरा वो विल टेक केयर ऑफ हिम और इस स्कूल के बारे में सर फर्स्ट टाइम आई रेड द पिटीशन तब मुझे इसकी जानकारी हुई दिल्ली कॉलेज को एवरी डे यू नो अबाउट Thank you, sir. Thank you, sir. Grateful, sir.